Welcome to all the aspirant. Today I am going to discuss about the different sectors of economy related to production. इसमें क्या कहते हैं फोर सेक्टर्स होता है. एक तो रहता है हाउस होल्ड, एक तो रहता है फार्म्स, अनदर रहता है गवर्नमेंट सेक्टर्स, अनदर इज थर्ड एंड फोर्थ इज external sector. Household matlab the individual who consume goods and services for self satisfaction and they are the owner of primary factors of production. Then what are the प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? इसमें क्या क्या है? एक तो लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योरशिप है. लैंड मतलब क्या होता है? ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज, इट इंक्लूड द लैंड ऑल्सो. Natural resources like mountain, like forest, like river, like land. Okay, and labor means the human effort which used in production activity. Okay, or for that labor got the wage or salary, or landowner get that rent for that land. And capital means the money or the effort given by a individual to purchase the capital goods. Capital goods का मतलब क्या होता है? The goods, capital goods are those good which use for further production in that activity or production activity. For example, I purchase that mobile phone and I use myself, that is consumer good, but I use that mobile phone for making that lecture is called capital good. That means for another example, suppose you purchase a coffee machines and you make coffee and you sell in the market. For you, that coffee machine will be considered as capital good because that coffee machine is used to produce further goods जैसे coffee and you sell in the market. Okay. And entrepreneurship मतलब who maintain or who arrange land, labor, capital and initiate the production into activity, उसको कहते हैं entrepreneurship. Another is firms. Firms are production units where using the service of household or effort of humans to produce the goods and services in an economy. Economy का आपका definition you know because first lecture में economy का definition I will दिया था. फिर से बोल रहा हूँ. Economy is a region एंड उसमें वेल डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स था एंड दैट रूल्स इंप्लीमेंट के लिए प्रॉपर इंस्टीट्यूशन शुड बी देयर, उसको कहते हैं इकोनॉमी. एंड गवर्नमेंट सेक्टर क्या होता है? गवर्नमेंट सेक्टर इट इन्वॉल्व रिलेटेड टू टैक्सेशन, सब्सिडी, एडमिनिस्ट्रेशन, रेगुलेशन एंड जुडिशियरी. There are government should be run and for that there is need of money and that money come from taxation. Okay, and subsidies means government sometimes attract the foreign companies to set up their business unit in India. For that they government give that subsidy to that company. For example, government arrange the land for the companies very cheap cost and sometimes give the tax reduction. Got the point? And subsidy in tax. Another is administration. Administration, there should be just a police maintain the law and order, judiciary maintain the dispute or resolve the dispute. Okay, and external sector it is not domestic territory, it is exist outside the territory. For example, just FDI, foreign direct investment. Export, it is present outside the country. Okay, another is what are the factors or primary factors of production. क्या क्या होता है इसमें? चार थिंग्स होता है. एक तो लैंड, ऑलरेडी यू नो दैट ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज लाइक river, like land, like mountain, like forest. Okay, and labors means all human efforts that used in production units for produce final goods and services. And capital means funds to buy capital goods. Capital goods का example हमने अभी दिया. Another example, suppose you purchase a car and use for yourself, and that is that then the car will be as a considered as consumer goods. But if you use that car as a taxi, मतलब you rented that car, then it will be called as a capital goods. Another example, you suppose you purchase a board and you read there for yourself, that is the consumer goods. But you use that board for making the lecture, then that will be considered as a capital goods. Entrepreneurship मतलब individual who arrange the land, labor and capital to initiate a production activity, उसको कहते हैं entrepreneurship. Got the point? Next, GDP क्या होता है and GNP क्या होता है and इसका calculation क्या होता है? Before understanding the start the GDP, you have to understand the basics of concept like that. Accounting year क्या होता है? Quarter क्या होता है? Accounting year if it is different from country to country, but for India it is 1st April to 31st March of next year. For example, suppose इस साल का जो अकाउंटिंग ईयर है अप्रैल 1st अप्रैल टू 31st मार्च 2025, 1st अप्रैल 2024 टू 31st मार्च 2025, इसको कहते हैं अकाउंटिंग ईयर.
ओके, गॉट द पॉइंट। और एनी इंडिया में अकाउंटिंग ईयर को 4 क्वार्टर में डिवाइड किया गया है। एक तो Q1, Q2, Q3, Q4। Q1 में कौन सा मंथ थे? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर मिला के Q2 बना। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर मिला के Q3 एंड Q4 इज जैन, फेब, मार्च, 31st March टू। ओके, एंड जो जीडीपी होता है ना, इट इज द एस्टिमेशन, माने किसी भी कंट्री में कितना प्रोडक्शन हो सकता है इस साल, इसको एक एस्टिमेट करते हैं। इट इज नॉट, इट कैन नॉट, समटाइम इट विल बी फुलफिल, समटाइम इट इज क्रॉस, समटाइम इट इज अंडर दैट। ओके, फॉर एग्जांपल इंडिया का जीडीपी सपोज 2030 में 5 ट्रिलियन का जो टारगेट रखा, मतलब अभी वो हमने एक एस्टिमेट किया। गॉट द पॉइंट। एंड दैट जीडीपी इज कैलकुलेटेड बाय एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, एंड that will that is work under the Ministry of Statistical and Program, Ministry of Statistic and Program Implementation. Okay, and NSO, it was formed in 2019-20, and it will be the it was combination of CSO and NSSO, मतलब सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एंड नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, दोनों मिला के एनओसो एस्टेब्लिश्ड हुआ। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नाउ द डेफिनेशन क्या है जीडीपी का? जीडीपी का डेफिनेशन क्या है? जिसको कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। इसको डेफिनेशन में क्या कहा जाता है? टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन ए डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ एन इकोनॉमी इन ए गिवन अकाउंटिंग ईयर। जीडीपी का डेफिनेशन देने में यू हैव टू अंडरस्टैंड थ्री थिंग्स। एक तो फाइनल वैल्यू, and another is domestic territory, and third is accounting year. That means value plus domestic territory and plus accounting year। फाइनल वैल्यू, डोमेस्टिक टेरिटरी, अकाउंटिंग ईयर, तीनों चीज रहना चाहिए डेफिनेशन के टाइम जीडीपी का। ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड ट्रांसफर पेमेंट से पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड पेमेंट क्या होता है। पहले का जमाने में बार्टर सिस्टम वाज देयर, यू समटाइम्स यू अंडरस्टैंड दैट इट विल बी एक्सचेंज ऑफ गुड with goods, उसको barter system कहते हैं। suppose you want cloth but you have rice and gehu, the cloth producer is given you cloth but you have to give the needs of the cloth producer। for example, he or she needs gehu, so you have to exchange with gehu with cloth। okay, ट्रांसफर पेमेंट क्या तो पेमेंट क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ मनी फॉर ए गुड्स और सर्विसेज। अभी सपोज यू वांट टू परचेस मोबाइल फोन, यू गिव मोबाइल मनी एंड यू गॉट द मोबाइल फोन, तो इसको कहते हैं पेमेंट। सपोज आपने ऐसे पेमेंट किया बट उसके बदले में यू डोंट वांट एनीथिंग इन रिटर्न, उसको कहते हैं ट्रांसफर पेमेंट। फॉर एग्जांपल, सपोज पेमेंट मेड विदाउट रिसीविंग एनी गुड्स एंड सर्विसेज इन रिटर्न, इसको कहते हैं पेमेंट, ट्रांसफर पेमेंट। एग्जांपल क्या? ओल्ड एज पेंशन, स्टूडेंट स्कॉलरशिप, चैरिटी और डोनेशन। मतलब इन दैट केस ओल्ड एज जो पेंशन देते गवर्नमेंट नथिंग वांट इन रिटर्न, स्टूडेंट स्कॉलरशिप देते गवर्नमेंट नथिंग वांट रिटर्न, स्टूडेंट कुछ अच्छा कर ले, दैट इज द गुड थिंग फॉर ईच स्टूडेंट, ना कि गवर्नमेंट। बट इन लेटरल ओवरऑल इट विल बी बेनिफिटेड, बट स्टूडेंट जो स्कॉलरशिप देते हैं उस वो गवर्नमेंट नहीं मांगते, यू हैव टू डू दैट, यू हैव टू रिटर्न अस। ओके, and another is charity or donation, but in that case sometimes सोशल मीडिया में लोग फेमस होने के लिए भी चैरिटी देते हैं, इसके मतलब दैट इज द रिटर्न अर्न, बट डोनेशन, प्रॉपर डोनेशन में कोई भी रिटर्न नहीं मांगते। ओके, इसको ट्रांसफर पेमेंट कहते हैं। इन अनदर थिंग्स यू हैव टू नोट दैट इंडिया गिवन सब्सिडी इन एग्रीकल्चर और इन फर्टिलाइजर और इन ट्रेड आर नॉट काउंटेड एज ट्रांसफर पेमेंट। बिकॉज ट्रांसफर पेमेंट क्यों नहीं कहते? क्योंकि गवर्नमेंट गिवन द सब्सिडी इन एग्रीकल्चर, दैट मीन्स दैट farmer got buy the fertilizer in subsidized price and use that fertilizer to produce goods, I mean agriculture goods, so that is the part of production activity। okay, so subsidy in agriculture in India is not considered as a transfer payment। same as trade, suppose some company want to make the product that will be export, तो इसमें फॉरेन मनी आएगा कंट्री में, तो फॉर दैट गवर्नमेंट गिवन सब्सिडाइज टैक्स, वेरी चीप रेट में लैंड दे दिया, तो दैट इज पार्ट ऑफ द एक्टिविटी ना, प्रोडक्शन एक्टिविटी, सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट पार्ट ऑफ ट्रांसफर पेमेंट। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। इसका टाइप क्या क्या होता है? एक तो कंज्यूमर गुड्स,
used by household for self-satisfaction. For example, car, shirt, food, and also that suppose you purchase mobile phone and use it, that is the self-satisfaction के लिए. And capital goods मतलब which use for further production. जैसे कार अपने खरीदे, इसको टैक्सी एज ए टैक्सी यूज्ड, इसको कैपिटल गुड्स कहते हैं. यू परचेस कॉफी मशीन, यू मेक कॉफी एंड यू सेल इन द मार्केट, सो फॉर यू coffee machine is a capital goods. Suppose you purchase coffee machine and you consume for yourself only, in that case that coffee machine is not as a capital good. Okay, that will be as a consumer good. इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? सपोज कोई भी चीज बनाने के लिए इंटरमीडिएट जो गुड्स यूज होता है उसको इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल, सपोज यू मेक कॉफी एंड फॉर दैट यू नीड टू बाय मिल्क एंड टी, सो मिल्क एंड टी इज एज ए इंटरमीडिएट गुड्स. एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड फाइनल गुड्स जो होता है ना, उसका जो वैल्यू होता है उसमें ऑलरेडी इंटरमीडिएट गुड ऐड रहता है. फॉर एग्जाम्पल, सपोज 10 रुपए का मिल्क लिया प्लस 10 रुपए का शुगर लिया और आपने जो कॉफी बनाया उसको बेचा 50 रुपए में. So age of the final value of the coffee is 50 rupee 50. So in 50 में ना already 10 and 10 added है, but इसको जब फाइनल वैल्यू कैलकुलेट करने जाओगे तब 50 प्लस 10 नहीं करोगे, क्योंकि इस 50 में ऑलरेडी 10 प्लस 10 ऐड है. सो इसको डबल काउंटिंग अवॉइड करने के लिए बनाया जाता है, जैसे कि कैलकुलेशन ऑफ फाइनल गुड्स मीन्स कंज्यूमर गुड्स प्लस कैपिटल गुड्स. ओके, उसको ही कहते हैं फाइनल गुड्स का वैल्यू कैलकुलेशन करना. ओके, नाउ आपने पढ़ा था जीडीपी में क्या था, एक तो डोमेस्टिक टेरिटरी था, एक तो अकाउंटिंग ईयर था, और तीसरा क्या था, एक फाइनल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट और गुड्स. तो डोमेस्टिक टेरिटरी, उसमें जो डोमेस्टिक टेरिटरी था उसका डेफिनेशन क्या है? लैंड बाउंड्री of a country, sea boundary till 12 nautical mile. You have to remember that every country does not have the sea boundary, because many countries are landlocked. For example, Bhutan, Nepal, Kazakhstan, Central Asian few countries, European few countries, they have not even a 1 kilometer of sea boundary. So for that there is a land boundary is that domestic territory. Okay, another कुछ exception है. Suppose आपका इंडिया का कोई aircraft and ship operated by resident companies in another country. For example, India ka aircraft land in USA, that area will be considered as the Indian domestic territory. India ka ship operated in Africa, that ship will be considered as the Indian domestic territory. Okay, and oil and gas platform operated by resident companies. For example, so Indian oil company work in Sudan, work in Iran, work in Venezuela, work in Russia, that platform will be considered as the Indian territory. Okay, another example as they are embassy. Another example is, suppose Indian embassy work in USA, Indian High Commission office in British, so that office will be considered as the Indian domestic territory. Simultaneously USA का embassy work in India, that is India USA का domestic territory, India का नहीं. Got the point? Next, that is end here. I will discuss the next important topics in the next lecture. For that you have to stay tuned with my channel, and please do subscribe, and thank you for watching.